This meeting is being recorded. Cool. So मैं क्या कह रहा था, किसी भी जाविये से इस चैप्टर को हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। पास्ट पेपर में इससे रिलेटेड सवाल, खास करके एमसीक्यूज, इतने खतरनाक आते हैं कि कभी कभार 5-5, 6-6 मिनट लग जाते हैं उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने में। और ये कब होता है? एंड यू डोंट हैव इनफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर आपके पास इनफ प्रैक्टिस होगी तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो माय रिकमेंडेशन और माय एडवाइस और माय रिक्वेस्ट, वट एवर यू अंडरस्टैंड, कि भाई बहुत डिसिप्लिन चाहिए इस चैप्टर में हमें। व्हाट डू आई मीन बाय डिसिप्लिन? वट एवर आई एम टीचिंग यू, रिवाइज इट, ठीक है, एंड रिवाइज इट एंड देन अप्लाई इट अकॉर्डिंग टू द पास्ट पेपर्स, ठीक है बेटा। So this is the only way you can excel in the topics like kinematics. ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। Okay, we have AS. We need to bring our raw document for kinematics. Where is it? Somebody give me greetings. सलाम किया किसी ने? वालेकुम अस्सलाम। आवाज बहुत कम आ रही है जिस ने भी सलाम किया है। So this is our chapter AIG. Yes. So chapter 2 of A levels or AS is kinematics. Mechanics में जितनी kinematics होती है, हाँ, mechanics वालों के पास ये advantage होता है that they have kinematics from two different perspectives. वालेकुम अस्सलाम जुबिया, how are you? So चलें देखें, the reason why I was saying कि इस चैप्टर को हल्के में नहीं लेना, मैं क्यों कह रहा था? Look at the syllabus outline. बच्चा बोलता है, Are you kidding me? इतनी आसान सिलेबस आउटलाइन, और यही गलती होती है। बट एक और न्यूज आपसे शेयर करता हूं। आई वॉज गोइंग टू ऑर्डर इट फॉर मी। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, छोटा सा गिफ्ट दिया है, प्यारा सा गिफ्ट दिया है। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे ऑर्डर करने से पहले मेरे पास ये एज अ गिफ्ट आ जाएगा। क्या आया है भाई? मुश्ताक भाई। See, somebody sir. gifted me a pillow. Are you kidding me? तो जब जब ओ लेवल्स में हमारे बच्चे यूनिट की गलती करेंगे तो ये पिलो, वैसे तो मैंने सोचा था मैं खुद ऑर्डर करूंगा, बट पता नहीं कहाँ सुन लिया उस बच्चे ने। अल्लाह ताला ऐसे स्टूडेंट सबको दे। है खूब। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। Smack them with this pillow. I will. Even this pillow will reach the, ये पिलो किसी बाउंड्री, किसी बॉर्डर की ख्याल वयाल नहीं करेगा, जाके बच्चे के मुंह पे पड़ेगा डायरेक्ट अगर वो यूनिट की गलती करेगा। फॉर यू गाइज इट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बेटा।
Okay, Okay, sir. so that kinematics chapter is very much similar to what you had in O levels by the name of motion. ठीक है, बस एक नया टॉपिक इस चैप्टर में आया है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, बाकी ओवरऑल तकरीबन सेम है. हाँ, मोशन ग्राफ्स थोड़े से हाई लेवल पे चले गए हैं, तो आराम आराम से सुकून सुकून से इत्मीनान इत्मीनान से हम इसे डील करेंगे. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो ऐड हुई है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस. ठीक है, चलिए शुरुआत में दो. सर या ब्रो, सर मैं कह रहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट ड्राइव पे डाल देंगे, क्योंकि वो मैं वो साथ 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 कर रहा हूँ ना, सॉल्व आईपैड चलो पे. मैं क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा. सर वो क्लास के बाद फिर वो, सर मैं उस पे कर रहा हूँ ना, आईपैड पे कर रहा हूँ, तो वो. ओके, ये लो जी बेटा, सर. आपके लिए, सिर्फ आपके लिए. थैंक यू सो मच सर. वेलकम. Where are we? CITS. सर This एक is, सवाल है. here we go. Yeah, bro. क्या सवाल है? ये तो मैकेनिक्स पढ़ते हुए सारा बड़े मजे की बात बता रहे थे, तो आप कंफर्म करनी थी ये बात. मैक्सिमम हाइट के बाद अगर बॉल नीचे जाती है तो वो कभी डीएक्सेलरेट कर सकती है. Decelerate maximum height के बाद हाँ. um, only when it is about to achieve terminal velocity. Small heights पे नहीं होगा ये काम, हाई हाइट्स पे सही. होगा. ठीक है, ऑलराइट. शायन हो गया अपलोड, देख लो आप. ओके सर, थैंक यू. वेलकम. चलो, तो distance, what is distance? The actual path covered by a body is called distance. And in terms of scalars and vectors, as you can see, this is the actual path I covered. Okay, so I'd have multiple directions. So I'll call this as scalar quantity because I don't have one single direction. Similarly, if I talk about displacement, it's basically a shortest distance from a starting point to ending point. Okay, and since it has one single direction, it's a vector quantity. Okay, so let's write down the definition of both. And we just said displacement being a vector quantity. Since both distance and displacement are the distance, I mean length based quantities, so दोनों के SI unit और base units मीटर होते हैं. ठीक है, ये लाइटिंग सिस्टम सही है या फिर वही वाइट वाली लाइट्स लगा दूं? Both look good. हाँ, सही ऐसे ही लग रहा है. आवाज ये अच्छे लग रहा है. Both look good. ये अच्छा लग रहा था मुझे. I have more options as well since I have RGB lights, so I can tune to any color you want. क्या बात है. Cool. Let me know when you are done so that we can move ahead. Okay, डन सर. cool. सर मुझे बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन मिला था. ये जो कंफ्यूजन होती है एक्सेलरेशन की, नेगेटिव या पॉजिटिव की, मैं उसको शेयर कर दूं आपके साथ. हाँ, मुझे शेयर कर दे.
जब हम पास पेपर्स करेंगे तो इंशाल्लाह उसे देखते हैं। चलें, so after distance and displacement concept, we need to talk about what? We need to talk about speed and velocity. So speed is the distance covered per unit time, यानी एक बॉडी 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, that is what you call speed. And when you talk about velocity, how much displacement is covered in 1 second? Yes, time taken to cover a distance. Time taken to cover a distance. I mean, I just understood your concept, but जो words हैं थोड़े से आगे पीछे हो गए. Distance covered per time taken, but I understood your what you want to say. Cool. चलो, distance covered per unit time, या बिल्कुल ठीक है. So speed is the distance covered per unit time. And ऐसा यूनिट क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है नीचे टाइम है, तो डिस्टेंस as unit meter, time as unit second. You can also write down the units as ms minus 1. ठीक है, so this way हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला भी आ जाएगा. ठीक है, so let's write down the formula for speed. G, the units are ms minus 1. M should be small. This may be a typo error. Cool. Now, can anyone help me or help us understanding कि हमारे पास what do you mean by or what do we mean by average speed? Mics are open, you can unmute. Iman is saying total distance upon total time. Ifra is also saying the same thing. Yeah, you can unmute yourself. You don't need to raise your hand. Ji beta. Okay. So total distance covered per total time is what you call average speed. And when do we need the concept? Yes, Rava, you are also right. Yes, Zubia, you are also right. So when do we need the concept of average speed? When you are talking about the whole journey. For example, let me give you an example of my journey throughout the day. At 7 o'clock, I woke up. Okay, at 7:20, I left my home. ठीक है, शुरू में रोड आया जिस पे ट्रैफिक जैम था. ठीक है, जहां पे I had to move slowly. Then open road आया, I accelerated. I became शपाटर boy. सही है. उसके बाद सिग्नल आया, I stopped at the signal. And then again I speed up and I reached my first morning affiliation. That is the Taurus campus. नया कैंपस है, बड़ा प्यारा कैंपस है. Cool. So इस पूरे जर्नी में I was not having one single speed. If you talk about the accumulated journey, तो accumulated journey की जो speed होती है, that should be found using the concept of average speed. ठीक है? So when you have the journey, the speed of the whole journey, where the speed continuously changes, this is where you use the concept of average speed. So according to you, average speed is the total distance over total time.
And how do we write average? There are two ways to write average. One like this, and the other like this. ठीक है? दोनों methods आप follow कर सकते हैं. So let's write down the definition and the formula for average speed. यार आप में से कोई हमारा बाहर का बच्चा पाकिस्तान आएगा? सर शायद मैं दिसंबर को पाकिस्तान हूँ. दिसंबर में आओ. So tell me one thing. I have been looking for one thing. Unfortunately, it's a bit unavailable in Pakistan. Ray box. So yes, something like this. ये रे बॉक्स. मुझे ऐसी एक डिवाइस चाहिए. All right. For sure, I'll pay. So I'll figure let it me out. know अगर आपके पास आपकी तरफ अवेलेबल है ये. Sure. स्क्रीनशॉट ले लें, बताइएगा. उसको क्या कहते हैं फिर से? लेजर रे बॉक्स और ऑप्टिक्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है? डन हो गया. और मैंने अगर वो ये पूरा क्वेश्चन भी भेज दिया. हाँ, अगर ये पूरा सेट भी है तो बेहतरीन हो जाएगा. और अगर ये सिंपल सिंगल रे बॉक्स भी है तो भी मेरा काम हो जाएगा. Cool. So average speed is what? The total distance covered per total time. We use this concept when we have to talk about the whole journey. पूरे दिन की बात करनी है. ठीक है? एक सिंगल स्पीड से आप नहीं ट्रैवल कर रहे हैं. Only then you have to use this concept. Kindly send message to chat-questions because this screen is in front of me so that I can pop your questions in the live class. So if you talk about velocity, what is velocity? The displacement covered per unit time is what you call velocity. And the formula for velocity is displacement upon time. The units are same as speed, ms minus 1. आयन वही सवाल भेजा है. जी सर. Okay. So if you have done writing the definition of velocity, do you have any idea what or how, what is the definition of uniform velocity, or how can you define uniform velocity? A velocity that's constant. That is the synonym Increasing speed. of
यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, ये तो दो नाम हो गए, डेफिनेशन क्या होगी? An Increasing object that's speed. traveling in the same velocity for a specific amount of time. ओके, दूसरी आवाज क्या आ रही थी? सेकंड माइक अनम्यूट किसने किया था आयान के साथ? So it's when the speed is not changing or the direction isn't changing as well. It's just going at ओके, a ठीक है, but what examiner wants to have, or what examiner wants to see is both Iman and Ifra are letting us know same displacement covered per unit time, constant change in displacement over time. ठीक है, तो this is basically uniform velocity. जब आपकी बॉडी हर इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करती, फॉर एग्जांपल एट 0 seconds the velocity is 0 meter per second, 1 second 2 meter per second, उल्टा बोल दिया, मीटर होगा यहाँ पे, 2 seconds body covered 4 meter, 3 seconds body covered 6 meter, 4 seconds body covered 8 meter, यानी every meter body is covering 2 meter distance. ठीक है, तो same distance or displacement covered per unit time is called, अगर distance है same distance covered per unit time, it's uniform speed. If the same displacement covered per unit time, it's uniform velocity. When a body covers same displacement in every interval of time, that is what you call uniform velocity. Done? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Done, sir. चलो, Done, sir. cool. Acceleration. How can you define acceleration? अच्छा, The one more rate of The thing, change point of of speed. एक मिनट रुकिए, मैं सिमुलेशन के थ्रू भी आपको थोड़ा सा वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट देता हूँ. मोबाइल सिमुलेशन जनरल. the uniform velocity में acceleration 0 होती है ना? यस, ओके, तो सी, if I decrease the amount of friction, ठीक है, to 0 and start applying force, keeping in mind मेरे पास speedometer सामने है, see this. So if you look at the speedometer में हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, तो सी दैट इज व्हाट यू कॉल यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है, स्पीडोमीटर पे कोई चेंज नहीं दिखाई देगा. एंड दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी एज वेल, क्योंकि एक सिंगल डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, तो दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, स्पीडोमीटर तो स्पीड ही रीड करेगा ना, बिकॉज स्पीडोमीटर डज नॉट सी द
डायरेक्शन, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, सही है। एंड दिस इज व्हाट a non-uniform velocity may look like. देखें speedometer की value because of friction, the speed decrease हो रही है until the body comes to rest, and this is where the body have come to rest. ठीक है. Similarly, I want to show you one important thing as well, and you need to keep an eye on the acceleration. I mean, need to keep an eye on this bar, and here it's positive, that means here is negative. ठीक है. So see, if I am applying the force, I'm having what? देखिए अभी हमारे पास क्या आ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ रही है. Here, if you can see this part. So when did we have positive acceleration? When the speed of the body increases. If you look at the speedometer, speed of the body increase कर रही है. And when do we have negative acceleration? जब हमारी बॉडी की स्पीड डिक्रीज होगी, लाइक दिस. ठीक है. अब देखें बॉडी की स्पीड नेगेटिव पे जा रही है, ये पॉजिटिव पे जा रही है, स्पीड बढ़ रही है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, स्पीड कम हो रही है, तो वी आर हैविंग नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है बेटा. जी सर। तो एक बात तो समझ में आई, जो कि आप लोग बोल रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, change in velocity per unit time. Yani whenever there is a change in velocity, there will be acceleration. The velocity of the body is increasing with respect to time, it's positive acceleration. जैसे normally हम acceleration कहते हैं. But if the velocity of the body is decreasing, if the body is slowing down, that is what you call negative acceleration. And there are two more names for negative acceleration. One is deceleration, and the other one is Retardation. retardation. Yes. Let's talk about acceleration. Acceleration is the change in velocity per unit time. And when you talk about the change in velocity, change is final velocity minus initial velocity. So final velocity is represented by uv, initial velocity is represented by u upon time taken. Okay. So this is how you can write definition and the SI units of acceleration. We already talked about the base units of acceleration in chapter 1. It's ms minus 2 or meter per second square. बड़ी मजे की बात बताऊं आप लोगों को, हमारा ओ लेवल्स का बिल्कुल। स्पेस फिजिक्स इज ट्रेंडिंग नंबर 1.
on YouTube. क्या बात है. ये देखो. See? वाह सर. Congratulations sir. Cool. Positive acceleration. What is positive acceleration? Thank you, Amal. Thank you, Afifa. Thank you, everyone. Okay. Positive acceleration is what? When body's speed increases, that is what you call positive acceleration. But when the speed of the body decreases, body slows down, that is what you call negative acceleration, deceleration and retardation. ठीक है. अब एक बड़ा slightly difference है negative acceleration and deceleration में. Negative acceleration is one, बहुत slightly difference है. Negative acceleration is one which makes the body slows down. Like for example, you are riding a car. Sorry, driving a car. You are driving a car and car drive करते हुए, ठीक है, just to slow down the car, you push the brake pedal. You don't want your car to be stopped, but you push the brake pedal. That is negative acceleration. But you are about to reach your home. You still push the brake pedal. Now your intention is not only to slow down your car, but also to stop the car. That is deceleration or retardation. Okay? तो इतनी डिटेल में वैसे हमें जाना नहीं है, बट दिल में आई बात तो बता दिया. दिल के गुलाम है हम, तो हमने दिल की बात मान ली है. And what is zero acceleration? When a body is at rest or when a body is traveling with uniform velocity. See from the simulation, body rest में है, acceleration की value हमारे पास क्या है? Zero. ये देखो body rest में acceleration की कोई value नहीं आ रही. ठीक है? When a body is at rest or yes Zubia, or when the body is traveling or moving with uniform velocity. See, the velocity is not changing and you cannot see any change on acceleration bar as well. So when the body is moving with uniform velocity, also you don't have any acceleration. So there are two conditions in which you cannot have any acceleration when body is at rest or moving with uniform velocity. Because formula क्या कहता है हमारे पास? Velocity is basically what? Change. Acceleration is change in velocity upon time. When there is no change, there will be no acceleration. ठीक है? Where is Mushtaq bhai these days? Behind my back. अभी आएंगे. Rebirth of Mushtaq bhai is indeed very near. I think इस चैप्टर में शायद ना आए, कमिंग चैप्टर में आएंगे. ओ आ गए भाई, मुश्ताक भाई आ गए. सर वो भी सबसे डरावनी चैप्टर में आया है. आएंगे और आगे तक आएंगे, टेंशन नॉट. कूल. तो चले डेफिनेशन लिखते हैं 3 जो हम लोगों ने समझी. अभी कहाँ गायब हुआ है? Is not taking the classes. Ravaha, basically, he's one of my character. Let me show you some of the
avatars of Mushtaq bhai. This is Mushtaq. This is Mushtaq, my handmade character. This is Mushtaq. Shape shifter. Yeah, Mushtaq bhai is घोल. घोल कहते हैं शायद. So anyone which helps you understand physics is Mushtaq bhai. ठीक है? Any of my character जो मुझ मिलेनियल को आप जेनजी से कनेक्ट करवाता है वो मुश्ताक है. समटाइम आई फील लाइक मैं भी मुश्ताक हूं. सर सही बताऊं, मुझे ये व्हाट्सएप पर स्टिकर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए. हाँ, ये देखें. दिस इज फॉर दी फिजिकल क्लास स्टूडेंट्स. जब अजान के दौरान बच्चे बात करते हैं तो ये उनके लिए है. बैड मुश्ताक. एंड फाइनली we have Gabbar Mushtaq as well. So all of these are the different forms or different avatars of Mushtaq Rawaha. So yeah. जी वो आगे आएगी. गब्बर सिंह की तजूबिया. ये तमाम हैंडमेड कैरेक्टर्स थे जो कभी जिंदगी में टाइम था तो डिजाइन किए थे. ओके चले. तो ये तो हमारी 3 डेफिनेशन हो गए. अब एक स्पेशल केस है हमारे पास और वो स्पेशल केस क्या है जरा समझते हैं. So when we talk about that special case, it's this. The car, my BMW, if I'm not wrong, ये BMW, ये Porsche, sorry, my Porsche is traveling 30 km/h towards west. ठीक है? It changes its direction. कार्टून नेटवर्क चल रहा है. ठीक है? Don't argue कि अचानक 90 डिग्री पे कैसे टर्न हो गई. Just imagine, हो रही है टर्न. So it changes its direction towards south while the magnitude is not changed. Will there be an acceleration? What do you think? Car has changed the direction. No. No? Okay. It's more like Nissan 400Z, maybe. Yes, because direction changes, velocity change. There will be acceleration. Yes, Ashbar. So, समझिएगा. Velocity is a vector quantity. And vector quantity depends upon 3 things. Unit, वो तो change नहीं हो रहा. Magnitude and direction. Now, if the magnitude changes, vector quantity changes. Even if the direction changes, vector quantity also changes. और दोनों भी बदलेंगे तो भी vector quantity बदलेगी. ठीक है? So here the magnitude is not changing, but we can see the direction is changed. So due to change in the direction, yes, there will be an acceleration. तो ऐसा सवाल पेपर में आया था कि हमारे पास magnitude, will there be an acceleration if the car is turning about the corner? The velocity is changing. See, like मैं आपको समझाता हूँ सन और अर्थ के मुताबिक. वैसे A2 में पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन अभी आपको सर्कुलर पाथ को समझाने के लिए दिस सिमुलेशन इज बेस्ट. ये देखिए. सर A2 कंपैरेटिवली AS से आसान है ना? इसको इस तरह समझें.
AS में you have coped up the level. आपको समझ में आ गया है कि जिंदगी आपसे क्या चाहती है. A2 में जब आपको समझ आ चुका होता है, आप मैच्योर हो चुके होते हो, तो आपको आसान लगता है. सही है. Alright. तो ये देखें, द ग्रीन एरो इज फॉर वेलोसिटी. सी, अभी वेलोसिटी कहां पर है? एट दिस स्टेज आवर वेलोसिटी इज दिस वे. सॉरी, ठीक है. एट दिस स्टेज velocity is this way. And at this stage, let's say the velocity is this way. So you see the change in the direction is happening. So due to change in direction, when the car is turning about the roundabout, there's a change in direction. And because of the change in direction, there will be an acceleration. आगे बढ़ेंगे, वो acceleration वैसे A2 में आप पढ़ेंगे. That acceleration when a car is turning about a roundabout, that acceleration, that special acceleration is called centripetal acceleration. And if you see this arrow, ये जो आपके पास arrow दिखाई दे रहा है, ये वाला arrow, this arrow is for centripetal acceleration, just for your information. ऐसे हमारे AS का डिस्कशन नहीं है, ठीक है. So we'll write, yes, there will be an acceleration because acceleration of vector quantity changes even when the direction changes. Not a lot of space related content. You can say A2 have only one chapter, astronomy and cosmology. तो बस एक चैप्टर है जो स्पेस रिलेटेड है. Done. Now who will explain what is uniform acceleration? How can you define uniform acceleration? Constant change in velocity per unit time. Yes, or you can say constant increase in velocity per unit time. For example, at 0 seconds, you have 0 meter per second. At 1 second, you have 3 meter per second. At 2 seconds, you have 6 meter per second. 3 seconds, 9 meter per second. 4 seconds, 12 meter per second. So in every second, you are increasing the velocity by the factor of 3 meter per second. That is uniform acceleration. Similarly, अगर कल को सवाल बोलता है define uniform deceleration, how will you define? At 0 seconds, let's say you have a velocity of 12 meter per second. 1 second, 9 meter per second. 2 seconds पे 6 meter per second. 3 seconds पे 3 meter per second. And 4 seconds पे your car is stopped. Now here the velocity is changing or decreasing by the same amount in every interval of time. That is what you call uniform deceleration. ठीक है बेटा? तो अगर एग्जाम में पूछे define uniform acceleration, same increase in velocity in every interval of time.
If he's talking about uniform deceleration, same decrease in velocity in every interval of time is what you call uniform deceleration. Okay, beta? Okay, चले. ओके, अगला टॉपिक हमारे पास आ रहा है मोशन ग्राफ. व्हाट आई बिलीव, मोशन ग्राफ में मैं सिर्फ आपको आज की क्लास में इतना बताऊंगा, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक कंटिन्यूटी में पढ़ना ज्यादा बेटर है. ठीक है? सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या होता है? सम स्टूडेंट understand this topic by by the factor of rise over run, or by the formula of rise over run. Like एक ये line है और एक ये line है. This is line 1, line 2. Which one do you think is having more gradient? 2, sir. Gradient 2 is having, line 2 is having more gradient. Yes, because it has more rise as compared to run. ठीक है? Now, one thing. The second thing, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है? थ्रू आउट कांस्टेंट होता है. यस, इट्स स्टीपनेस ऑफ द लाइन. जितनी स्टीपर होगी लाइन, उतना ही आपके पास ग्रेडियंट होगा. एंड स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है. सो हियर द फॉर्मूला फॉर ग्रेडियंट इज y2 minus y1 or x2 minus x1. I can also write it as difference in y-axis over difference in x-axis. This triangle represents difference. ठीक है? So see, I have drawn 4 lines here. Let's talk about this line first. MB gradient को represent करता है. ठीक है? So gradient is change in y-axis or change in x-axis. This line is only showing change along x-axis. It's not going up or down. That means there is no change on y-axis. So change in y-axis is 0. 0 divided by something is 0. That means whenever you have a horizontal line, you have 0 gradient. Yes, Dubia, you have 0 gradient. Okay? Similarly, let's talk about this light green line. It's changing along y-axis, but it's not going on x-axis. Yani change along x-axis is 0. And something divided by 0 is infinity. Okay? While वही बात जो ईमान ने कही
कि if you have less steeper line, you have less gradient. If you have more steeper line, you have more gradient. ठीक है? So this is how हम लोगों ने फिलहाल for the timing इतना discussion conclude किया. And what I want, हम आज की क्लास यहाँ से आगे ना लेके जाएं, because I want the coming topic है हमारा displacement time graph and velocity time graph, conversion of graph, वो एक continuity में क्लास में जाए. ठीक है? Up till now, if you have any question, you can ask. Yes. All okay. Cool. Clear, sir. All clear. Perfect. ठीक है. So let me tell you आज की क्लास हमने हम लोगों ने क्या किया. We started a new chapter by the name of kinematics, and we just covered the introductory point of view of that chapter. What is the speed? What is velocity? Distance, displacement, acceleration, types of acceleration, uniform velocity, uniform acceleration, and just a bit concept of gradient. This is what we covered in today's class. So inshallah, in next class, we'll start our motion graphs, and motion graphs के बाद we'll convert the graphs. एक थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है, मैं हर जाविये से कोशिश करूंगा that we cover the concept or the topic of graphs or motion graphs. तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़. Love, sir. Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफ़िज़. Laughter, sir. अल्लाह हाफ़िज़.